half wave rectifier, only half of the wave is rectified. And the circuit was this primary coil. It is AC input, which is to be rectified, transformer. And there's a secondary coil where you have a diode and a load resistance. So when it's positive, it's negative, it's forward biased. And the current flows in the circuit. And we get the output. In the second half cycle, this input AC, which is alternating, transformer, core, secondary, this is a diode, load resistance. It is negative, it is positive. So this time diode is reverse bias, and this is no current. In this case, current is there. So as a result, we get, half of the wave rectified, which is unidirectional but pulsating. If you talk about waveform of input and output, this is input waveform, which is alternating. The output waveform is rectified, which is like this. ये हमने लास्ट क्लास में किया था. Only half of the wave is rectified. For negative part, we don't get any output. Now let's write some story about this. Likho, working. It'll be 3-mark questions. So these two circuits plus this input-output waveform. This is input AC, and this is output DC. Likho, during first half cycle of input AC. During first half cycle of input AC, PN junction is forward biased. PN junction is forward biased as P type or P side of the diode, as P side of the diode is connected to higher voltage, higher potential, and N side, this is the P side, this is the N side, and the N side of the PN junction and N side of PN junction is connected to lower potential. As we know, in forward bias, junction offers a very little resistance. Junction offers a very little resistance and offers very little resistance. Junction offers very little resistance and allows current to flow through it and allows current to flow through this. As a result, current flows from A to B. Current flows
from A to B in the load resistance. In the load resistance. So, for positive input cycle, so for positive input cycle, we get positive output, right? सर बोलो। सर हाँ, व्हाट? सर कैमरा अपना बंद हो गया बीच में, पता नहीं। बंद हो गया? नहीं सर, दिख रहा है। अच्छा, दिख तो रहा है। हाँ, दिख मेरे रहा यहाँ है पे सर। कुछ हो गई दिक्कत। हम्म। सर मेरे यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गई थी। So अच्छा, it fluctuated for 1 second, but now it's fine. ओके फाइन। तो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल वी गेटिंग पॉजिटिव आउटपुट डीसी, एज यू कैन सी। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल की बात करते हैं। नेक्स्ट आगे लिखो। फॉर द सेकेंड हाफ साइकिल, for the second half cycle of input AC, for the second half cycle of input AC, PN junction, PN junction is PN junction is reverse biased. ये वाला circuit, PN junction is reverse biased as P side of the diode, P side of the PN junction, P side of the PN junction is connected to lower potential. P side of the PN junction is connected to lower potential, and N side of the N side of PN junction, N side of PN junction is connected to higher potential. As PN junction is reverse biased, as PN junction is reverse biased, it does not allow current to pass through it. It does not allow current to pass through it. Therefore, therefore, there is no output. There is no output during the second half cycle. There is no output during the second half cycle. Thus, in half wave rectifier, only half of the wave, only half in half wave rectifier, only half of the input AC is rectified. This is called half wave rectifier. This is called half wave rectifier.
the output obtained the output obtained is the output obtained is DC, but it's pulsating oblique fluctuating, but it is pulsating or fluctuating. This pulsating DC, this pulsating DC, this fluctuating or pulsating DC can be converted into constant DC, can be converted into constant DC using filter circuits, using filter circuit. फिल्टर सर्किट तुम्हारे कोर्स में नहीं है, सिर्फ इतना याद कर लो, उसमें कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर क्या करता है, जिस हाफ साइकिल में पावर मिल रहा है, वोल्टेज मिल रहा है, उसमें वो उसको एब्जॉर्ब करता है, और जहाँ पे नहीं होता वहां पे उसको सप्लाई कर देता है। नहीं नहीं, समझने के लिए वाइव में पूछ सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो पल्सेटिंग डीसी था वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि ये वेव फॉर्म था ना, तो ये इस तरह से हो जाता है ऑलमोस्ट। यहाँ से एब्जॉर्ब करके यहाँ पे सप्लाई कर देगा, यहाँ से यहाँ सप्लाई कर देगा। सो आउटपुट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, बट दैट इज नॉट इन योर कोर्स इन डिटेल। हटा दो उसको। नेक्स्ट इज फुल वेव रेक्टिफायर। इज अगेन वर्थ 3 मार्क्स। जैसे तुमने देखा हाफ वेव रेक्टिफायर में 50% ऑफ पावर तो वैसे ही वेस्ट हो गई, है ना। efficiency of half wave rectifier is less because 50% ऑफ इनपुट एसी तो वैसे ही लॉस हो गया। तो फुल वेव रेक्टिफायर में हम उसको अवॉइड करेंगे। कैसे करेंगे देखो, दिस इज इनपुट एसी, this is core of the transformer. This time we use 2 diodes and the transformer is mid tapping, मतलब इसका जो आउटपुट है वो बीच में से मिलता है, इसको बोलते हैं मिड टैपिंग ट्रांसफॉर्मर। सेंटर टैप और मिड टैपिंग, सेंटर टैप और मिड टैपिंग ट्रांसफॉर्मर। डायग्राम बनाओ। The two diodes D1 and D2. बन गया डायग्राम।
अब देखो उसमें क्या होगा. ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी, D1 वुड बी फॉरवर्ड बायस. ठीक है, ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा. ये नेगेटिव पी से कनेक्टेड है, तो D2 डायोड वुड बी रिवर्स बायस्ड. एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो डायोड फॉरवर्ड बायस है वो करंट को फ्लो करना अलाउ करेगा. इस वाले में दिल बी नो करंट. So the current will flow from A to B in the load resistance. Current will flow from A to B in the load resistance. तो इसकी स्टोरी यहीं पे लिख लेते हैं. During first during first half cycle during first half cycle of input AC during first half cycle of input AC, PN junction D1 is forward biased. PN junction D1 is forward biased, and PN junction D2 is reverse biased. PN junction D1 is forward biased and PN junction D2 is reverse biased, as shown in figure. आगे लिखो, PN junction D1 will allow current to flow through it. As a result, output will be obtained output will be obtained across load resistance in which current flows from A to B. तो लोड रेजिस्टेंस में डायरेक्शन करंट इज A to B हो गई. ठीक है, अब हम सेकेंड हाफ साइकिल बनाएंगे. दिस इज प्राइमरी कॉइल, दिस इज कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर, सिंबल है इसका. मिड टैपिंग सेकेंडरी, डायोड D1, दिस इज लोड रेजिस्टेंस, and this diode D2. This is A, this is B. इस बार क्या होगा, this is negative, this is positive, negative with P, so it is reverse biased. Positive with P, it's forward biased. Current will flow, and again you can see current की direction A to B. तो आपको क्या कैमरा नहीं दिख रहा? कुछ हो गया इसमें. तो हम्म, सर अगर आप जूम से अपने वो बोर्ड को शेयर स्क्रीन कर सकते हो तो वो बेटर रहेगा, आई थिंक उससे हमको दिखता भी रहेगा फिर. 1 मिनट, ये तो देखो ये क्या हो गया इसमें.
आया अब? हाँ जी सर। तो ये सेकेंड हाफ साइकिल का सर्किट है। डायरेक्शन ऑफ करंट वापस ए से बी में है। इसकी स्टोरी लिखो। ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ साइकिल, ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ साइकिल of input AC, during the second half cycle of input AC, PN junction D1, PN junction D1 is PN junction D1 is reverse biased, whereas PN junction D2, whereas PN junction D2 is forward biased, as shown in the circuit. Shown in the circuit. PN junction D1, PN junction D1 does not allow any current, does not allow any current to flow through it. PN junction D1 does not allow any current to flow through it. Whereas PN junction D2, PN junction D2 allows current to pass through it. PN junction D2 allows current to pass through it. And output is obtained across load resistance RL, across load resistance RL, in which current is again from A to B. Current is again from A to B. सर हाँ, एक बार रेजिस्टेंस आरएल इन विच के आगे बोल दो। सेंटेंस बोलो क्या था? तो and output is obtained across load resistance RL in RL in which current is from A to B. In which current is from A to B. मतलब पहले हाफ साइकिल में भी करंट का डायरेक्शन A to B था, अभी भी A to B है। मतलब करंट का डायरेक्शन हैज बिकम नाउ द सेम। तो दिस इज रेक्टिफाइड वेव फॉर्म आ गया हमारा। So we get rectified output, which is constant DC. Input alternating current था, output pulsating है, fluctuating है, but it's DC. Again, it's pulsating. उससे तो कम pulsating है, तो उसको भी constant wave form में convert कर सकते हैं using filter circuits. This pulsating output can be converted into constant DC output using filter circuits. Pulsating output can be converted into constant DC using filter circuits. फिल्टर सर्किट में कुछ होता नहीं है, कैपेसिटर लगा देते हैं। तो जब करंट फ्लो नहीं करता, जब करंट फ्लो करता है वो स्टोर कर लेता है एनर्जी, चार्ज। और जब करंट फ्लो नहीं करता उसमें सप्लाई कर देता है, तो कांस्टेंट करंट होती है ऑलमोस्ट। दिस इज फुल वेव रेक्टिफायर
वेव फॉर्म बनाना है, दोनों सर्किट, थोड़ी सी कहानी लिखनी है। तो अब तो सबका प्री बोर्ड डेट शीट मिल गया होगा ना? नहीं? हाँ, हमारा तो दिसंबर में फिजिक्स। बहुत लंबा खींच रहे हैं लोग, पूरे महीने एग्जाम है तुम्हारा। क्यों? हो गया ना ये सभी का? मैंने लिख लिया। बस एक सेकंड, वो बस ग्राफ बना रहा है। हम्म। मिल गए मार्क्स, मिले फिजिक्स के? तो कल पीटीएम में मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। और प्री बोर्ड की डेट शीट मिल गई? नहीं, बट टीचर्स ने बोल दिया है नवंबर, मिड नवंबर में होंगे। ठीक। दोस्त का है? बिना बिना पता चली गई तुमसे? ऐसा तो हो नहीं सकता। हो गया सर। ओके। एनर्जी बैंड डायग्राम्स। 2 to 3 मार्क का ही आता है। 1 का भी आ सकता है, ओनली फॉर इंसुलेटर, ओनली फॉर कंडक्टर्स, लाइक दैट। एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या होता है? एनर्जी बैंड डायग्राम इज बेसिकली, it represents the energy level of electrons in a conductor, insulator and semiconductor। ठीक है? जैसे कि दो एनर्जी बैंड्स होते हैं। एक होता है कंडक्शन बैंड, सीबी। तो अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स electrons have high energy, they're energetic, and they can conduct electricity। ऐसे याद करो। So if the electrons are in conduction band, they have more energy and they are able to conduct electricity. If electrons are in the valence band, they have low energy and they do not participate in conduction of electricity, but they participate in formation of bonds। Covalent bond होता है ना शेयरिंग में, ये होता है। So energy level is like this। So more energy means energy are electrons are conducting of free electrons. They will help in the passage of electricity। इलेक्ट्रॉन्स अगर वैलेंस बैंड में, उनकी एनर्जी कम है, मतलब दे विल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। एंड दिस गैप इज कॉल्ड forbidden energy gap। forbidden energy gap, gap between the conduction band and the valence band। तो इंसुलेटर्स में क्या होता है? इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, दिस गैप इज लार्ज। forbidden energy gap is more than 6 electron volt। मतलब even if we increase temperature, and by increasing temperature you are supplying more energy to the electrons, but they will not able to cross over the forbidden energy gap and move to conduction band। So since energy gap is very large in insulators में mostly electrons are कहाँ पे होंगे? Electrons are in valence band। maximum electrons valence band में होते हैं। And even if we increase the temperature or increase the voltage, they can't cross over to conduction band because the forbidden energy gap is quite large। So that's why insulators are poor conductors of electricity, because mostly electrons are in valence band, and since forbidden energy gap is large, therefore they cannot cross over to conduction band। कंडक्टर्स या मेटल्स में क्या होता है?
मेटल्स में दे आर ओवरलैपिंग. दिस इज कंडक्शन बैंड एंड दिस इज वैलेंस बैंड. सो मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होंगे इसमें, मेटल्स में, कंडक्टर्स में? दे विल बी इन कंडक्शन बैंड. और कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर वैलेंस बैंड में भी हैं, then they are energetic enough to be part of the conduction band. As a result, conductors will be able to allow passage of electricity to them very easily because of large number of conduction electrons. Diagram बना लो. सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा? सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन जनरली लो टेम्परेचर पे वैलेंस बैंड में होंगे. फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ज्यादा नहीं होगा. इट इज लेस देन 2 or 3 electron volt. So that is why when you increase temperature, some electron will be able to cross over to conduction band. यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है. रिमेंबर प्योर सेमीकंडक्टर में हमने देखा था कि व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन होता है. वो इसी तरह से होता है. वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया एनर्जी की वजह से. एज रिजल्ट वहाँ पे होल क्रिएट हो गया, वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया. सो इन सेमीकंडक्टर्स forbidden energy gap is less than 2 electron volt. As a result, when temperature is increased in a pure semiconductor, electrons from valence band are able to cross over to conduction band and conduct electricity. कंडक्टर्स में तो एज इट इज काफी सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में हैं, और कुछ वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन भी कंडक्शन बैंड का पार्ट है बिकॉज दे आर एनर्जेटिक. सो कंडक्टर्स allow free passage of electricity through them. Insulators में gap is more than 6 electron volt. मतलब it's difficult for insulators to allow passage of electric current through them. अब तुमने देखा था ये तो प्योर सेमीकंडक्टर का है. हमने when we form basically p टाइप सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म किया था? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करके, है ना? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में क्या हुआ था? एक्सेप्टर आयन था ट्राइवेलेंट, उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया था. तो इलेक्ट्रॉन वो गेन कैसे कर पाएगा? वैलेंस बैंड से. इलेक्ट्रॉन गेन तभी कर पाएगा वो वैलेंस बैंड से जब उसका अपना एनर्जी लेवल क्लोज टू वैलेंस बैंड होगा. सो दिस इज एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर. वो प्योर सेमीकंडक्टर का था. एंड ये डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, किसका एनर्जी लेवल है? एक्सेप्टर एटम का. तो क्या होगा? हाँ, ये वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, वो सेम प्योर सेमीकंडक्टर है. तो सिंस इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में थे, हमने एक्सेप्टर एटम को मिक्स किया. एक्सेप्टर एटम क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को स्नैच कर लेगा और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? होल. ये तो हुआ था. एक्सेप्टर ट्राइवेलेंट impurity will basically snatch one electron from nearby germanium germanium silicon silicon valence covalent bond. लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा when this energy gap is not very large. तो एक्सेप्टर एटम का एनर्जी लेवल इज क्लोजर टू द वैलेंस बैंड इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर. ये था प्योर सेमीकंडक्टर.
there could be a question that, draw energy band diagram for p-type semiconductor, or also show the energy level of acceptor atom, and why it should be close to the valence band. It should be close to the valence band so that electron can easily jump over to acceptor atom energy level from the valence band. n type में क्या होगा? In n type we mix pentavalent impurity. वो जो pentavalent impurities हैं वो क्या करते हैं? That pentavalent impurity will easily give away its electron, and that electron will go into conduction band. n-type semiconductor, if you remember, में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से थे? इलेक्ट्रॉन्स थे. तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कब आता है? जब डोनर एटम का इलेक्ट्रॉन यहां से जम करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है, क्योंकि मोस्टली इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में थे. तो ईच donor atom will provide us one extra electron in the conduction band, because pure semiconductor में तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर थे. p टाइप में एक्स्ट्रा होल क्रिएट हो गया, n टाइप में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मिल गया. So this is entire semiconductor finished. इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? एनर्जी बैंड डायग्राम, formation of p-n junction, depletion layer, barrier potential, forward bias, reverse bias characteristics, half wave rectifier, full wave rectifier. 7 मार्क का चैप्टर है, बिल्कुल फ्री के मार्क्स है, सारी थ्योरी है. तो अब कैसे करना है बताओ मुझे, कैसे तुम टेस्ट दोगे? एवरी फ्राइडे टेस्ट कर लें अब? क्योंकि टेस्ट तो बहुत सारे हैं तुम्हारे अभी. वेव तो ऑप्टिक्स, हाँ. सर मंडे को सेंटर खुला होगा दिवाली वाले दिन कि नहीं? नहीं नहीं, अच्छा ठीक है. तो क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई? नहीं सर, मैं कल टेस्ट देने नहीं आ पाऊंगा ना. आई वांट टू गिव द टेस्ट ऑफलाइन, सो देन आई कम अच्छा, ऑन ट्यूसडे ओनली. ठीक है. तो वेव ऑप्टिक्स का टेस्ट, फिर रे ऑप्टिक्स का टेस्ट, फिर एटम्स, डुअल नेचर, सेमीकंडक्टर का टेस्ट. देन वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर अगेन. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों मिला के एक हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी एक हो जाएगा, फिर मैग्नेटिज्म एक हो जाएगा, ईएमआईसी एक हो जाएगा. देन विल हैव फर्स्ट बुक का टेस्ट, सेकंड बुक का टेस्ट, देन मॉक टेस्ट. तो आइडियली शुड राइट एवरी वीक वन टेस्ट. तो कौन सा डे फिक्स करना है? एंड दैट शुड बी ऑफलाइन. तो तुम तो फिर अपने हिसाब से तो तुम पढ़ने वाले, मुझे मालूम है क्या होगा. अपने हिसाब से तो फिर अगले साल दोगे फिर, सर मंडे. जब प्री बोर्ड में जब फेल वेल हो जाओगे तब यू राइट द टेस्ट नेक्स्ट ईयर. तो अपने हिसाब से तो कुछ नहीं चलने वाला. मैं एक डेट शीट बना दूंगा टेस्ट का एवरी फ्राइडे, ठीक है? कौन सा टेस्ट कब होना है उसके 1-2 दिन आगे पीछे कर सकते हो. अदरवाइज आई मार्क एब्सेंट एंड पुट इन योर पेरेंट्स ग्रुप, ठीक है? तो वो तरीका है. क्यों तो कैन मनन, वी डू इट वही है ना मंडे? सही? हाँ, कैन वी डू इट मंडे? एवरी मंडे. या फिर ऐसे अब क्लासेस होंगी कि नहीं होंगी अब? एक क्लास तो करेंगे ना, टेस्ट पे क्लास टेस्ट. प्लस टेस्ट. हाँ मतलब क्लास या तो छोटी कर लो, 1 घंटे कर लेते हैं. मतलब टेस्ट तो जरूरी है ना, टेस्ट का डिस्कशन. हाँ जी. वो तो आई वांट कि बिना टेस्ट के कैसे पता लगेगा क्या कर रहे हो तुम लोग. रिवीजन भी करते रहेंगे साथ साथ, न्यूमेरिकल्स एक्स्ट्रा कर लेंगे. तो टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वरना तुम लोग बिल्कुल फ्री हो जाओगे. वैसे तो फ्री चल रहे थे 1 साल से, पूरा 2025 तो मस्ती में निकला है, 24 भी निकला है. अब प्री बोर्ड के जब रिजल्ट आएंगे, 70 में से 15, 20, 18 ऐसे टाइप्स के, तब फिर सीरियसली पढ़ाई शुरू हो जाएगी. राइट. अभी क्या कराऊं? कौन से चैप्टर में डिफिकल्ट लगता है सबसे?
EMIC तो आरव। मेरा एसी में डाउट था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, यस। तो या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरू कर लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं वो एक बार लिखवा देता हूँ सारे जो आएंगे। 2 मार्क्स लेके 5 मार्क तक, ठीक है। पॉसिबल क्वेश्चंस आल्सो। स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ। स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ। K is 1 by 4 pi epsilon naught, which is 9 into 10 to the power 9. आरव, K का यूनिट क्या होगा बताओ। अगर से तुम बताओ, इसको तो वैसे टफ लगता है। K का यूनिट। सर आई एम नॉट अरे सर पर्टिकुलरली ये रिमेम्बर। कांस्टेंट है यहीं तो से तो आ जाएगा ना। यूनिट याद नहीं करना है, तुम फॉर्मूला देख लो बस। अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है, यू कैन डिफाइन एंड गेट द यूनिट फ्रॉम हियर। K का यूनिट कैसे निकलेगा। आर स्क्वायर को उधर ले जाओ और Q1 Q2 को नीचे ले आओ। तो K इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर ओवर Q1 Q2, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है सर। तो स्टेटमेंट भी आना चाहिए तुम्हें, दैट फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of the magnitude of the charges. ठीक है, product of magnitude charges and inversely proportional to square of the distance. So statement आ सकता है, k का डायमेंशन भी आ सकता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो n का तुम्हें डायमेंशनल फॉर्मूला पता है वैसे भी, m1 L1 T-2 फोर्स का होता है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा लेंथ स्क्वायर, एंड कूलम इज एम्पेयर इनटू टाइम 80। उसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये हो जाएगा M1 L3 A 2 T-4। देन के की डेफिनेशन कैसे बताओगे। हाउ विल यू डिफाइन के। वहीं से डिफाइन कर सकते हो, के इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाय Q1 Q2। सर यूनिट फोर्स, यूनिट चार्ज एंड यूनिट डिस्टेंस, के इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन। बस आ गया। Q1 Q2 को 1 डाल दो, आर को 1 डाल दो। So constant K will be numerically equal to the force, electrostatic force between two unit charges when separated by unit distance. K is numerically equal to force between 2 point charges, because Coulomb's law holds true only for point charges. K equals to force between 2 point charges, each equal to unit 1 coulomb when separated by 1 meter. तो अपने खुद से अपने लिखना भी आना चाहिए तुम्हें, जो तुमने मैथमेटिकली लिखा है Q1 Q2, in your own words you should be able to write that also. So K is numerically equal to electrostatic force between 2 point charges separated by unit distance when each charge is 1 coulomb.
देन एप्सिलन आर का डेफिनेशन आएगा, इट इज फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम। एप्सिलन आर को स्मॉल के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट of a given medium. What is epsilon r? Relative permittivity of a medium. तो अगर दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालें when they are in air or vacuum, and then you find force between them at the same separation when they are in medium, then the दोनों का ratio is this, like 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. This is 1 by 4 pi epsilon q1 q2 by r square. तो वो सारा कट जाएगा, तो कभी भी तुम एप्सिलन आर को ऐसे डिफाइन नहीं करोगे, द रेशियो ऑफ एप्सिलन बाय एप्सिलन नॉट। डोंट डिफाइन इट लाइक दैट, डिफाइन ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ फोर्स। व्हाट इज एप्सिलन? इट इज permittivity of medium. It again has same unit of epsilon, जो एप्सिलन नॉट का था वही यूनिट होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम एप्सिलन नॉट निकालें तो कितना आएगा, 1 बाय 4 पाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9, एंड इट इज यूनिट क्या होगा इसका, जैसे रिवर्स हो जाएगा, न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स कूलम स्क्वायर, उल्टा हो जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी इसका रिवर्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, एंड देन दे माइट आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलन आर फॉर एयर। एयर का रिलेटिव परमिटिविटी कितना होगा? सो एप्सिलन ऑफ एयर इज एप्सिलन नॉट ओनली, 1 हो जाएगा, ठीक है। व्हाट अबाउट मेटल? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। मेटल और कंडक्टर, इंसुलेटर्स का इन बिटवीन होता है, लाइक वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी इज 80 और 79। क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है, सपोज अ गिवन मटेरियल हैज रिलेटिव परमिटिविटी 10, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट इंप्लाई? क्या क्या लिखोगे? इफ अ मीडियम हैज relative permittivity equals to 10, what does it signify? बताओ। That its permittivity with respect to air is 10. नो 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 नो, जरा इस फॉर्मूले को दोबारा देखो, एफ एप्सिलन नॉट इक्वल टू एफ ए बाई एफ एम। तो यहां से तुम एफ एम निकालोगे तो क्या आएगा वो, तो एप्सिलन नॉट 10 है ना उसका, तो मतलब व्हेन द चार्जेस आर प्लेस इन द मीडियम द फोर्स विल रिड्यूस बाय a factor of 10, दैट इज द मीनिंग ऑफ relative permittivity। लिख लो, relative permittivity is a factor by which relative permittivity is the factor by which force between force between force between 2 point charges reduces force between 2 point charges reduces when placed
इन द मीडियम, इन द मीडियम। तो जिस फैक्टर से फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस रिड्यूस होता है वो फैक्टर है दिस। लाइक अगर हम दो चार्जेस को पानी में डाल दें तो क्या होगा? द फोर्स विल रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ 80, इतना कम हो जाएगा। Then there could be, difference, similarities and dissimilarities between gravitational force and electrostatic force. Similarities between electrostatic force of interaction and gravitational force of interaction. बताओ। पहली सिमिलैरिटी क्या है? Yes, both are inversely proportional to square of the distance. So you can say that both laws obey inverse square law. Both the laws obey inverse square law. तो दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रहे हैं। Second, both are conservative forces. Both are conservative forces. Conservative force का मतलब होता है work done does not depend upon path taken, but it depends only on the initial and the final position. लिखते जाओ। Both are conservative forces. साइड में कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन लिखो। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स does not depend upon path taken, but it depends upon initial and final position of the particle. It depends upon initial and final position of the particle. तो दोनों फंडामेंटल, हाँ ये तो हो गया कंजर्वेटिव फोर्स। थर्ड पॉइंट है सिमिलैरिटी का, बोथ आर फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। Both are fundamental forces of nature. Forces. और बताओ, और कुछ याद आ रहा है? Central force. Yes, both are central force. Central force का मतलब है, तो अनन्या तुमने पढ़ना शुरू कर दिया, नोट्स बनाने शुरू कर दिए? Yes, sir. लग रहा है मुझे। तो जैसे 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो जो फोर्स लगेगा वो इसके अकॉर्ड, दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग लगेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल फोर्स। So when 2 point masses are there, 2 point charges are there, then the force would be acting along the line joining the two masses. Then it's a central force. Non-central force कौन सा होता है? Nuclear force is the force which is non-central force. Proton और न्यूट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स तरह भी हो सकता है, non-central. It's not necessary that the force will be along the line joining the two protons, two neutrons, proton neutrons. इसको नॉन सेंट्रल बोलते हैं। न्यूक्लियर फोर्स इज नॉन सेंट्रल फोर्स, वाइवा में पूछा जा सकता है। न्यूक्लियर फोर्स इज नॉन सेंट्रल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्सेस हैं।
तो इतना काफी है मेरे ख्याल से। ठीक है, डिसिमिलैरिटीज बताओ। इन व्हाट वे दे आर डिसिमिलर? So electric force depends on the medium and gravitational force does not. यस, लिख लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, whereas gravitational force does not depend upon the medium. दो मासेस हवा में हो, पानी में हो, कहीं भी हो, दो मासेस, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वही रहेगा। जबकि चार्जेस में, अगर वाटर में है तो फोर्स रिड्यूस हो जाएगा बाय फैक्टर ऑफ 80। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, 80 होता है, कम हो जाएगा। और डिसिमिलैरिटी बताओ। Electrostatic force is strong force, is a strong force, and जैसे gravitational force is a weak force. जितने भी चारों फंडामेंटल फोर्सेस हैं उन चारों में ग्रेविटेशनल वीकेस्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज a weak force, whereas electrostatic force is strong force. न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वैसे, बट ग्रेविटेशनल फोर्स से काफी स्ट्रांग है। एंड इफ यू रिमेंबर, हमने इन दोनों का रेशियो भी निकाला था, फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स एंड फोर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कैसे आया था वो? अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे तो आएगा K इंटू ई बाई आर स्क्वायर। और इसमें क्या आएगा? जी एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय आर स्क्वायर कट जाता है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻39। ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू दैट ग्रेविटेशनल फोर्स। और बताओ। Gravitational force is attractive and electrostatic force is attractive and repulsive both. यस, ये भी लिख लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव as well as repulsive. Electrostatic force is attractive as well as repulsive. Whereas gravitational force is only attractive. Then principle of superposition of charges. ये पता होना चाहिए तुम्हें, अगर कई सारे चार्जेस हैं और किसी पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर हमें फोर्स निकालना है, then the resultant force is vector sum of the forces on that particular force. Suppose इस चार्ज पे फोर्स F1 है, इसकी वजह से फोर्स F2 है, इसकी वजह से फोर्स F3 है, इसकी वजह से फोर्स Fn है। So when number of charges are present, the net force on a given charge is given by forces acting on that charge due to individual charges. Net force on a given charge equals to the vector sum of individual forces acting on that charge. इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जब हम सपोज Q0 और Q1 में फोर्स निकाल रहे हैं, तो इन दैट सिचुएशन वी नेग्लेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। जब हम Q0 और Q2 में फोर्स निकाल रहे हैं, तो उस सिचुएशन में वी नेग्लेक्ट प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस। ये भी आ सकता है 1 मार्क का।
significance of principle of superposition of charges. लिख लो. Force, significance of the principle of superposition of charges. It signifies that force between any two charges is independent of the presence of other charges. Force between any two charges is independent of the presence of other charges. Is independent of the presence of other charges. इसके बाद ये भी चाहो तो ये भी कर सकते हैं. आता तो नहीं जनरली ये. Continuous distribution of charges. Line charge or linear charge. Because Coulomb's law holds true only for point charge. तो अगर charge is uniformly distributed over a wire or a thread, then it's called line charge. ठीक है? Charge distributed over a wire or a thread is a line charge, and lambda is charge per unit length, dq by dl. And this is called linear charge density. Linear charge density is charge per unit length. Symbol for linear charge density is lambda. It can be positive, it can be negative. Gauss's law में काम आएगा. Where positive charge distributed है, the charge is distributed uniformly over it. Unit क्या होगी इसकी? Coulomb per meter. Dimensional formula ATL -1 per meter है ना. तो since Coulomb's law holds true for point charge, तो फिर हम इसको dq ले लेते हैं किसी पॉइंट पे. लिख लिया. अब तुम्हारे रेडी नोट्स बन जाएंगे हर चैप्टर के इस तरह से. फिर उसके बाद हम एक बार थ्योरी खत्म करके फिर न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, एमसीक्यू कर लेंगे. सरफेस चार्ज. Surface charges when charges distributed over a surface or a sheet surface charge density is sigma. Charge distributed per unit area. Surface charge density dq by dA. Unit will be dimensional formula ATL -2.
ये भी गॉस लॉ में यूज होगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम। जैसे कि यू हैव ग्लास ऑफ वाटर, उसमें इंक ड्रॉप डाल दी तो इंक पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यूनिफॉर्मली। आटे में नमक डाल दिया, उसको मिक्स कर दिया, दैट इज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ओवर द वॉल्यूम। कंडक्टर्स में इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि कंडक्टर में चार्ज कभी भी इनसाइड द वॉल्यूम नहीं जाता, इट ऑलवेज रिमेन ऑन द सरफेस। इट इज मीनिंगफुल ओनली इन द केस ऑफ insulators. Rho is meaningful only for insulators. V is the volume of this cell है ना, खत्म होने वाला है। Rho से you represent this, only meaningful for insulators. किसी कंडक्टर में अगर इंजेक्शन से भी हम चार्ज देंगे तो वो सरफेस पे आएगा, इट ऑलवेज रिमेन ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। उसका रीजन ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। ये डायमेंशनल फॉर्मूला ATL -3। Then the concept of electric field. During summers, we sit nearby an AC or a fan. During winters, we would like to sit nearby, under the sun or nearby a heater. कभी ऐसा हुआ तुमने गर्मियों में एसी ऑन कर दिया और छत पे जाके सो गए? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो कहने का मतलब जितना तुम नजदीक बैठोगे एसी के, उतना तुम्हें कंफर्ट लगेगा समर्स में। विंटर्स में तो पंखा भी अगर थोड़ा सा भी चल रहा होगा, थोड़ा दरवाजा भी खुला होगा तो सर्दी लगती है। तो सिमिलरली व्हेन यू हैव ए चार्ज, अराउंड द चार्ज there is a space where other charges could experience a force. तो इस चार्ज के पास तुम किसी चार्ज को लाओगे तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस सराउंडिंग ए चार्ज where other charges could experience a force. लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड is space, electric field is the space surrounding a charge where where other charges where other charges could experience where other charges could experience a force of attraction or repulsion. Electric field is the space surrounding a charge where other charges could experience a force of attraction or repulsion. क्योंकि मेन चार्ज पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। This is a test charge which is taken to be always positive by convention and small in magnitude. तो अगर मेन चार्ज पॉजिटिव है तो ये रिपल्सिव फोर्स इस पे लगेगा। अगर मेन चार्ज नेगेटिव है तो टेस्ट चार्ज पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो दिस इज द क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट देन वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। उसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही कहा जाता है, बट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? Force experienced per unit test charge. Electric field intensity is represented by E,
It is force experience per unit charge, where the charge is tending to 0. So this is the definition of electric field intensity. Electric field intensity at a point is the force experienced per unit test charge, F by Q naught. And test charge is always taken very small, otherwise it will alter the configuration, location, position of the main charge. अगर टेस्ट चार्ज में बहुत बड़ा ले लिया तो वो अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा, उसकी वजह से मेन चार्ज शिफ्ट हो सकता है. जैसे कि सपोज इसको ऐसे समझते हैं, एक पेंडुलम पे बॉब है और उस पर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है. इसका फील्ड मेरे को यहाँ पे निकालना है. तो अगर मैंने टेस्ट चार्ज यहाँ रखा और ये टेस्ट चार्ज बहुत बड़ा है मैग्नीट्यूड में, तो ये रिपेल होके आगे चला जाएगा. मतलब बिकॉज ऑफ टेस्ट चार्ज बीइंग लार्ज, द मेन चार्ज जिसके हम फील्ड फाइंड कर रहे हैं वो शिफ्ट हो जाएगा उसका ओरिएंटेशन. So that's why we want this charge to be as small as possible. So this test charge is taken to be small so that it does not alter the configuration, position of the main charge. It is a vector quantity. All 1 mark questions. Electric field intensity को electric field भी बोलते हैं generally. So electric field intensity or electric field is a vector quantity. And the most important part is it has the same direction. लिखो लो. It has the same direction as the direction of force experienced by a positive test charge over there. जिस पॉइंट पे तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे एक पॉजिटिव, हाँ लिखो. क्या लिखा है मैंने? इट हैज द सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. कहने का मतलब अगर किसी पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, वहां पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखो और देखो फोर्स किधर लग रहा है. तो इस पॉजिटिव मेन चार्ज की वजह से फोर्स इधर लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में होगा. Suppose we have a negative charge and I want to know what is the field over here. Place a test charge which is positive. तो इस पे attractive force लगेगा, मतलब electric field भी वही होगा. So electric field has the same direction as that of a positive test force experienced by a positive test charge. Unit क्या होगा इसका? Unit फॉर्मूले से निकल आएगा. Unit is Newton per coulomb और वोल्ट पर मीटर. बोथ आर ऐसा यूनिट. कूलम पर मीटर, वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम. और अगर पॉइंट चार्ज है तो उसकी से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस. यहाँ पे I'll put a test charge and I'll find the force and उसको फिर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से डिवाइड कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड will be force by Q naught. Force is K Q naught Q. एक चार्ज है, एक चार्ज है. Separation is R. Q naught कट जाएगा. So this is the formula for electric field. Electric field due to a point charge. If you have a point charge Q, then the electric field is KQ by R square. Direction तुमने देख ही ली है. डायरेक्शन कैसे पता करोगे? उस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज रख के देखो, जिस डायरेक्शन में उससे फोर्स लगे वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा.
फॉर्मूला ये, लेकिन ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए है, ठीक है? इज ओनली बिकॉज ऑफ ड्यू टू पॉइंट चार्ज. देन इसमें न्यूमेरिकल हम बाद में कर लेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का बेस्ट वे होता है दैट वी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इमेजिनरी लाइंस, ठीक है? सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? किसी को याद है? What are electric lines of force? What is electric field lines? Electric field lines basically represent path of a unit positive charge under or inside a given electric field. Electric field lines, so electric lines of force represent path followed by a unit positive test charge placed in a place inside a given electric field. These are imaginary lines. जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज है, अब मुझे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में रिप्रेजेंट करना है, तो व्हाट आई डू इज आई प्लेस अ यूनिट टेस्ट चार्ज जो कि पॉजिटिव है, तो कहाँ जाएगा? इट विल मूव रेडियली अवे. अगर एक पॉजिटिव चार्ज तुम रखोगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो रेडियली अवे जाएगा. यहाँ रखोगे, इट गो लाइक दिस. यहाँ रखोगे, इट गो अवे फ्रॉम इट एंड सो ऑन. So these are the field lines due to a positive charge. Electric field lines due to a positive charge radially outward. अगर चार्ज नेगेटिव है तो तुम पॉइंट चार्ज को रखोगे यहाँ पे, इट विल मूव टुवर्ड्स इट like this. So these are the field lines due to a negative charge. Yes, Manan. सो मेरी दूसरी ट्यूशन में टेस्ट है 5:30 पे, मैं लीव कर दूं? ठीक. थैंक यू सर. If you have a positive and negative charge का combination, फिर field lines कैसे बनेगी? Electric field lines always begin from positive and terminate at negative charge. These are discontinuous lines. Negative हमेशा terminate होती है. Field lines because of positive and negative. पॉजिटिव का क्या होगा? They will repel.
Positive line. Similarly, you can draw it for negative negative also. नेगेटिव नेगेटिव में सिर्फ डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा. यहाँ पे मैंने दोनों पॉजिटिव चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड ले लिया है. मान लो एक नेगेटिव चार्ज है -q, दूसरा है -2q. फिर क्या होगा? जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है उससे फील्ड लाइन ज्यादा निकलेंगी. न्यूट्रल पॉइंट यहाँ बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर पर है. न्यूट्रल पॉइंट जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. इसमें क्या होगा? न्यूट्रल पॉइंट विल बी क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज और फील्ड लाइंस भी लेस होंगी. न्यूट्रल पॉइंट. Number of field lines you can represent double. So it's something like this. Negative charge lines terminate हो रही हैं. So I'll continue with this revision in the next class, Wednesday. Ending the class now. बाय सर, हैप्पी दिवाली. Okay, same to you.